In today's lecture, we are going to discuss about the surface tension. Now, surface tension is an important property of the liquids. Now, what do you mean by this surface tension? Surface tension is the tension of the surface film of liquid caused by the attraction of particles in the surface layer by the bulk of the liquid, which tends to minimize the surface area. It means surface tension has one effect on the liquid surface, that it tends to minimize the area of the liquid surface. And why it is so? Why it tends to minimize the area? This is because of the force of attraction between the molecules force of attraction between the molecules surface on liquid surface and in the bulk on the liquid surface and in the bulk of liquid. So such interactions give rise to and force that we call as surface tension. Now, surface tension, we can understand what causes the surface tension. Like here is an picture that show you a molecule inside. एक मॉलिक्यूल जो वाटर के अच्छी तरह अंदर है, तो उस पे बाकी जो मॉलिक्यूल जो हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सभी फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं. सो नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज ज़ीरो. दिस मॉलिक्यूल इज इन इक्विलिब्रियम. बट जो मॉलिक्यूल टॉप लेयर में हैं, जो टॉप लेयर के पास हैं, तो उनमें क्या रहता है कि उनके नीचे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं. सो नीचे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो नीचे इंटरेक्शन बाकी मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा है. ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है. सो ऊपर देयर इज़ नो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है. तो ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि इनकी जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है. नाउ एवरी सरफेस, अगर इस पे नीचे को फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स टॉप लेयर में आते हैं तो दे हैव टू डू मोर वर्क डन. उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ा. अब ज़्यादा वर्क करा तो उनमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी. अब ज़्यादा एनर्जी का मतलब होता है लो स्टेबिलिटी. तो इसलिए कोई भी लिक्विड सरफेस अपना एरिया कम करने की कोशिश करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी. अब इस सरफेस टेंशन को कैसे मेज़र करते हैं? तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे एक लिक्विड सरफेस. सो ये मान लो एक लिक्विड सरफेस है जिसमें ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. सो दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक लाइन एज्यूम की जिसकी लेंथ है L. अब इस लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाकी मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, राइट. तो इन पे जो फोर्स लग रही है वो मान लो कि F लग रही है मॉलिक्यूल्स पे. जिस लाइन में मॉलिक्यूल्स हैं उन पे फोर्स लग रही है F, और उस लाइन की जो लेंथ है वो L है. तो दिस इज़ फोर्स अपॉन लेंथ इज़ कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. इसको T या S से हम डिनोट करते हैं. सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. So the ratio of surface force to the length of L along which the force act is called surface tension. अब इसका SI यूनिट देख लेते हैं क्या होगा. SI यूनिट विल बी, बिकॉज फोर्स का न्यूटन होता है और लेंथ इज मीटर, सो न्यूटन पर मीटर. और CGS यूनिट में ये आएगा डाइन पर सेंटीमीटर. सो डाइन पर सेंटीमीटर यूनिट CGS यूनिट एंड न्यूटन पर मीटर इज SI यूनिट. डिमेंशनल फार्मूला देखते हैं इसका क्या होगा. तो डिमेंशनल फार्मूला विल बी फोर्स का फार्मूला विच इज़ m1 L1 T minus 2 अपॉन लेंथ इज L1. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट m1 L0 T minus 2. दैट इज अ डिमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन. Next, there are some important properties, examples of surface tension, like an insect can walk on water because an insect has very small mass, so gravity will be very small. So due to the force of surface tension can hold its weight.
that this is the force of surface tension, because that acts tangent to the liquid and solid surface. So here the weight is downward, but the resultant of these two forces, force of surface tension, will balance the weight. So net force will be in upward direction, that is equivalent to weight. So that's why it can walk on the water. Floating a needle can float similarly on the surface of water due to the force of surface tension. Now, cleaning of clothes by soaps and detergent which lower the surface tension. More is the surface tension means less spreading of the liquid. But on adding soap and detergent, we can lower down the surface tension. So it can spread very well on the surface of the clothes, and clothes can be washed easily. Similarly, washing with cold water is difficult. Why? Because the cold water has more surface tension, so less spreading on the cloth and the dirt. So dirt cannot be removed easily. So difficult to wash the clothes in cold water. Round bubbles. Bubbles have a shape that is spherical, because sphere has minimum area for a given volume. So because of property of surface tension, it tries to occupy minimum volume. So that's why it tries to acquire a spherical shape. So bubbles and liquid drops are have their shape as spherical. If the size of the drop is larger, then it will not remain spherical, then it become oval. Now what is the reason for that? Because gravitational force, gravity, weight of the drop increases, due to which the surface tension force, it overcomes the surface tension of water, surface tension force of the water, so it doesn't remain spherical, and it becomes you say oval shape. Let's take a numerical now. It is a compute the surface tension of given liquid whose dragging force, drag means surface force, is 7 Newton, and length in which the force act is 2 meter. So here force is given as 7 Newton and length is given as 2 meter. So dividing this, we will get the surface tension. As we know, the formula is force upon length. So it is 7 upon 2, that will be equal to 3.5 Newton per meter. So very simple question to us. Then is variation of surface tension of liquid with temperature and impurities. Now what are the factors that affect the surface tension of liquids? Now there are two factors. One is temperature and other is impurities. Now with the increase in temperature, the surface tension of liquid decreases, and at its boiling point the surface tension becomes almost zero. And in case of impurities, we have two type of impurities. One is soluble and other is insoluble or sparingly soluble, insoluble or less soluble. Now in case of soluble impurities, what happens? The surface tension will increase. Surface tension increases, like in case of ethyl coal, when mixed with water, then surface tension of the liquid will increase. But in case of insoluble impurities, just like you have detergent soap solution type, so in this they remain suspended in the liquid, and in that case the surface tension will become less. So when surface tension becomes less, then it becomes easy to wash the clothes. So that's why we use detergent or soap solution to wash the clothes. So that's all about the surface tension in this lecture, and we will meet with a new video in my next lecture. Thank you very much. Thank you.